of matter. Thermal properties of matter. Next chapter. Thermal properties. In thermal properties, let's see what is heat. What is heat? Tell me. Heat क्या है? Yes, heat is in the form of energy which always flows from high temperature to low temperature region. Write down heat. It is in the form of energy. Write down heat. It is in the form of energy. It is in the form of energy. Yes, yes. सब मिलेगा. Yes, yes. Write down. It is in the form of energy. It is in the form of energy which flows from high temperature to low temperature. High temperature to low temperature. तो यूनिट ऑफ हीट का यूनिट क्या है? सेम एज वर्क, बिकॉज इट्स एनर्जी, सेम एज एनर्जी. इन SI it is what? Joule, and in CGS it is what? Arg. Beside this, other units are also written, that is what? Calorie and kilocalorie. Write down unit of heat. Unit of heat in SI, that is joule. In CGS it is what? Arg. Write down beside these units, calorie and kilocalorie also used. Calorie and kilocalorie also used. Beside this, calorie and kilocalorie also used. Calorie, CL, kilocalorie also used. Understand this? That is what? Heat. And dimension of heat is what? Same as what? बताया था. Dimension of heat is M1 L2 T minus 2. Dimension of heat is M1 L2 T minus 2. Clear? That is what? Heat. Now, temperature. What is temperature? Write down. Next is your temperature. Let's see. Temperature. What is temperature? This is the degree of hotness or coldness of a body. Write down. Temperature. फॉर्मूला ऑफ हीट बाद में देखेंगे. ये क्यू ई हीट है. हीट इज सेम एज वर्क, सेम एज एनर्जी. अरे हीट इज सेम एज वर्क, सेम एज व्हाट? एनर्जी. अंडरस्टैंड दिस? एवरी वर्क रेफर्स टू एनर्जी, एवरी एनर्जी रेफर्स टू हीट. अंडरस्टैंड दिस? तीनों इंटर रिलेटेड है. उसके बाद देखेंगे फॉर्मूला ऑफ हीट क्या है. लिखो टेम्परेचर. व्हाट इज Sir, टेम्परेचर? दिस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए sir, बॉडी. hello. दिस इज द degree of hotness or coldness of a body. Hello, sir, hello. Yes, sir. लिखो टेम्परेचर. हेलो. Sir, हाँ बोलो बोलो. sir, from where अरे did you थर्मल start? प्रॉपर्टीज, ये थर्मल प्रॉपर्टीज लिखा है. ये थर्मल प्रॉपर्टी लिखा है. यहीं से शुरुआत हुआ. हीट. Yes, हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. राइट डाउन. ये हीट लिखो. क्यू. हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. यूनिट ऑफ हीट in SI, joule. In CGS it is Arg. Besides this, other units are used, calorie and kilocalorie. And the dimension of heat is M1 L2 T minus 2. Dimension of heat is M1 L2 T minus 2. Now temperature. Write down temperature. It is a degree of hotness or coldness of a body. It is the degree of hotness or coldness of a body. So I want to measure temperature. In order to measure temperature, so many scales are there. So many scales. You can prepare by your name also a scale. No problem will be there. Write down. Following scales are used to measure temperature. देखो, following scales are used to measure temperature. Following scales are used. Following scales are used to measure temperature. To measure temperature. To measure temperature. What are the scales used to measure the temperature? Let's see this. First famous scale. First famous scale is what? Celsius scale. Degree centigrade scale or Celsius scale.
फर्स्ट स्केल, क्लियर। सेकेंड स्केल, फेमस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल है ये, डिग्री फ़ारेनहाइट है। थर्ड, ये भी फेमस है, क्या है, अरे ये भी फेमस है, इसका क्या है, कैल्विन स्केल, Kelvin. कैल्विन। फोर्थ, फोर्थ कुछ फेमस है, फोर्थ, फोर्थ रेयरली यूज्ड, दैट इज व्हाट, डिग्री रिमर स्केल है, डिग्री रिमर, 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 आर ई यू एम, अरे गलत हो गया स्पेलिंग, आर ई यू, रिमर, रिमर स्केल, डिग्री रिमर स्केल, अंडरस्टैंड दिस। एंड अपना नाम पे भी एक बना सकते हो स्केल, वाह, अपने नाम पे भी बना सकते हो। तो इसमें दिस इज व्हाट, अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट, सभी में कितना देखते हैं, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट। सेंटीग्रेड स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री फ़ारेनहाइट में लोअर कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कितना 200, कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, अंडरस्टैंड दिस। एंड कैल्विन स्केल में लोअर कितना है, हेलो, अरे लोअर कितना है कैल्विन स्केल में, बोलो, 273 कैल्विन, एंड दिस इज व्हाट 373 कैल्विन, दिस इज व्हाट 373 कैल्विन। र्यूमर में कितना, र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर एंड 80 डिग्री र्यूमर। अपने आप पे भी, अपने नाम पे भी एक बना सकते हो, उसका लोअर फिक्स पॉइंट कुछ रखो, अपने आप अपर फिक्स पॉइंट पता चलेगा कितना है ये, वाह, समझ में है। तो why we are reading so many scale and what is the relation between all the scale, how can you prepare the scale, you see the formula to prepare the scale is what, this is what very famous formula, name of scale, name of scale minus lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point is a constant, that is always a constant, ये है what concept behind to prepare a scale, understand this, name of scale minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point is constant, very important name, लिखो, what do you mean by this, देखते हैं, what do you mean by this, देखो, फर्स्ट डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस स्केल के लिए लिखे, नेम ऑफ द स्केल इज डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री डिवाइडेड बाय अपर है 100 माइनस 0 है, फिर इसको इक्वेट करेंगे, फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे, नेम फ़ारेनहाइट है, लोअर फिक्स पॉइंट 32, अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस 32, फिर कैल्विन के लिए लिखेंगे, नेम इज कैल्विन, नेम इज कैल्विन, name is Kelvin, minus 273, upper is what 373 minus 273, next reamer के लिए लिखेंगे, name is degree reamer, name is degree reamer minus lower is 0 divided by 80 minus 0, ये है relation, this is what the relation among all the scales, this is what the relation among all the scales। तो तुम भी जो प्रिपेयर करोगे स्केल, अपना नाम दोगे, उसका माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, दिस इज द नेम that is given, understand this, so this is what the relation between all the scales, name of scale minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point is constant, if you fix your if you are preparing by your own name, you can you can just fix a lower fixed point, then automatically you will get the upper fixed point by putting this formula, understand this, easily you can get that what upper fixed point, how much you should keep the upper fixed point, clear, because this is what the relation among all the scales, जितना भी scale है temperature का, this is what the relation among them, लिख दिए, अरे completed, कन्वर्जन देंगे, लिखो कन्वर्ट, यस बोलो क्या है, which one, अरे which I will repeat,
अरे देखो ये मेरा मिला व्हाट, सभी स्केल को कंबाइन कर दिया ये। नेम ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लिखा, फ़ारेनहाइट के लिए लिखा, केल्विन के लिए लिखा, डिग्री र्यूमर के लिए लिखा हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन आई कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू another. I can easily convert from one scale to another. Is that clear? अरे समझ में आया सभी को? हेलो, अरे समझ में है ना? तो क्वेश्चन लिखो। अरे प्रतीक समझ में Yes, है? sir. ओके लिखो क्वेश्चन। Yes, sir. कन्वर्ट, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट कन्वर्ट 40 डिग्री र्यूमर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट करो। 40 डिग्री र्यूमर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? Convert 40 degree remote into degree Fahrenheit. Convert this. Convert 40 degree remote into degree Fahrenheit. Convert this. Convert this. You see, पहले रिमर डिग्री रिमर माइनस जीरो बाई 80 माइनस जीरो फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना है 32 बाई 212 माइनस 32। डिग्री रिमर का वैल्यू दे दिया 40। 40 माइनस जीरो बाई 80 माइनस जीरो, डिग्री फ़ारेनहाइट मुझे निकालना है माइनस 32 बाई 180। तो दिस इज व्हाट 40 बाई 80 इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180। तो कितना आ रहा है? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 90 प्लस 32। तो कितना आ रहा है? 122 फ़ारेनहाइट। समझ में है? 40 डिग्री इज डिग्री रिमर इज इक्वल 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैन यू वर्कआउट? अरे अभी कर पाओगे कन्वर्जन? एग्जाम में गिरेगा। कैन यू कन्वर्ट नाउ? Yes, sir. ओके लाइक दिस यू कैन कन्वर्ट। क्लियर? और एक क्वेश्चन लिखो। राइट ऑन अनदर क्वेश्चन। कन्वर्ट 150 Kelvin into convert 150 Kelvin into degree Fahrenheit. 150 Kelvin into degree Fahrenheit. One fifty Kelvin into degree Fahrenheit. यस आ गया? हेलो, 373 minus 273 is your degree Fahrenheit minus 32 by 212 minus 32। तो K minus 273 K में दे दिया आई थिंक 150। K में दे दिया है, K में दे दिया ये 150 है। तो 150 minus 273 divided by what 100 is Sir, equal degree Fahrenheit minus 32 by 180। yes ये नेगेटिव में sir, आएगा। yes सही sir, है minus आशीष। 189.4. यस तो व्हाट इज दिस? माइनस कितना रहा ये? माइनस 3, दिस इज अ 2, 189.4. 123 है। माइनस Minus 123 189. 189 या 123 आ रहा है? Minus Sir, 189.4. minus हाँ 180 123 by yes ओवरऑल 100. यू आर टेलिंग ओके। दिस इज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय 180। ये कैंसल्स आउट। अंडरस्टैंड दिस? तो ये आ रहा है व्हाट माइनस 12.3 इंटू 18 प्लस 32 इज अ डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना मिल रहा है? हाउ मच आर गेटिंग? माइनस 189.4 माइनस 189.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 150 Kelvin you are going to get minus 189.4 degree Fahrenheit. Understand this?
This is the way we can convert from one scale to another scale. We can convert the temperature from one scale to another scale. समझ में है? Next. Next is your thermal expansion. Let's see this. What is that thermal expansion? देखो, next is your thermal expansion. What is that thermal expansion? When heat is given, the material gets expand. मैं अगर एक solid ले रहा हूँ, उसको अगर मैं heat दे रहा हूँ, तो automatically that will expand due to what? Increasing kinetic energy. When you are giving heat, heat means what? You are giving energy. What type of energy you are giving? Kinetic energy. Every molecule start to vibrate. When vibration takes place, the material gets expand. That is known as thermal expansion. Right on thermal expansion. This is the phenomenon by which देखो thermal expansion. This is a phenomenon by which expansion of the material takes place. This is the phenomenon by which expansion of the material takes place. Expansion of the material takes place on supply heat. Expansion of material takes place on supply heat. Expansion of material takes place on supply heat. Clear? हीट दिया तो एक्सपांसन होगा, चाहे लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो या फिर गैस हो, क्यों सभी एक्सपेंड कर रहे हैं? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. अंडरस्टैंड दिस? तो नाउ टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांसन लिखो. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांसन. Types of thermal expansion. Following are the types of thermal expansion. Number 1, linear expansion. Linear expansion. Number 2, aerial expansion. Area expansion, or this is known as superficial expansion. Superficial expansion. Superficial expansion. Third is your volume expansion or cubical expansion. Volume expansion or cubical expansion. Volume expansion or cubical expansion. Let's see that linear expansion is what? Linear means what? Straight line. If expansion takes place in a straight line only, because breadth is negligible there, the breadth is negligible, then that is known as linear expansion. Let's see that. First, write down number 1, linear expansion. First is linear expansion. Linear means what? Straight line. That is linear expansion. Write down linear expansion. Likho. When expansion takes place lengthwise, when expansion takes place lengthwise, when expansion takes place lengthwise, then it is known as linear expansion. When expansion takes place lengthwise, then it is known as linear expansion. When expansion takes place lengthwise, then it is known as linear expansion. मतलब सिर्फ लेंथ में ही एक्सपांशन होगा. मतलब क्या है? ओनली लेंथ वाइज एक्सपांशन होगा. मतलब क्या है? लेंथ वाइज एक्सपांशन मतलब ये एक मेरा व्हाट, अरे ये एक मेरा एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल नॉट है. पहले मेरा ये लेंथ था कितना? सर वॉइस पहले ब्रेक हो मेरा रहा है. पहले मेरा लेंथ था एल नॉट एल जीरो Sir, मीन्स voice is लेंथ breaking. एट Sir, 0 degree centigrade. Whenever temperature is given to this rod, sir, there is hello. an expansion takes place in the rod. Hello? Sir, सर voice breaking वॉइस from ब्रेक हो last रहा हो one रहा है. minute. है. ओके, नेटवर्क भी ये अनस्टेबल हो सर गया. आपका ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है. अभी सही हुआ? अभी सही हुआ? हेलो हेलो. Yes, sir, from the beginning, sir. Beginning. Explain. Okay, देखो linear expansion. When expansion takes place lengthwise, then it is known as linear expansion. Let a rod is expanding. Let L0 is the original length of the rod at 0 degree centigrade. Now if you are giving heat to this rod, the rod get expands. The rod get expands there. The rod get expands. कहाँ तक expand करेगा?
Suppose the rod is expanding like this, rod is expanding like this, means now let this what, lt is the, lt is the, यहीं से यहीं तक lt is the length of the rod, expand हो गया, expand होने के बाद टेम्परेचर दिया तो expand हुआ, expand होने के बाद इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है lt है, lt is the length after what, after expansion, क्लियर। ये ओरिजिनल लेंथ यहीं से यहीं तक मेरा ओरिजिनल लेंथ है। अभी आफ्टर गिविंग टेम्परेचर हीट व्हाट द एक्सपांशन टेक्स प्लेस, कितना हीट दिया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो एक्सपांशन हुआ, लेट एल टी इज द फाइनल टेम्परेचर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में एल सर जीरो और एक लेंथ, बार रिपीट कर सकते हैं, yes डिस्कंटिन्यू हो yes गया था। let L0 is the L0 length, से L0 is the length of the rod at 0 degree centigrade, after giving heat LT is the length of the rod at T degree centigrade। समझ में है, लिखो, write down, let, write down, let L0 is the length of, L0 is the length of the material at 0 degree centigrade, L0 is the length, is the length of material, length of material, length of material at 0 degree centigrade, and LT is the length of the material, of material at T degree centigrade। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा there is what, there is a change in length, there is a change in length, understand this। now what is the change in length here, change in length is what, LT minus L0, write down, the change in length, लिखो, the change in length, the change in length del L, change in length कितना है, del L, del L is what, LT minus L0, that is the change in length, the change in length del L, that is LT minus L0, LT minus L0 is what, the change in length is what, bit 1, bit 1 में क्या है, change in length is directly proportional to the original length, do you agree with this, original length जितना ज़्यादा होगा change in length भी उतना ज़्यादा होगा, do you agree with this, अरे ओरिजिनल लेंथ मेरा जितना ज़्यादा होगा यस सर, यस चेंज इन लेंथ में भी उतना ज़्यादा होगा, देयरफॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा चेंज इन लेंथ उतना ज़्यादा होगा। बिट 2 में क्या है, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, वेयर डेल टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट डाउन, वेयर डेल टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, लिखो, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा चेंज इन लेंथ भी उतना ज़्यादा होगा, तो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, लिखो, where del T is the temperature difference, where del T is the temperature difference, then what will happen, you see, del T is the temperature difference, then what will happen, if you combiningly write these two, then del L is proportional to L0 del T, and one constant you will get if you just remove the proportionality sign, that constant is known as alpha L0 del T, where alpha is known as coefficient of linear expansion, write down, where alpha is known as coefficient of linear expansion, लिखो, where alpha is known as, alpha is known as coefficient of, coefficient of, alpha is known as coefficient of, alpha is known as coefficient of linear expansion, linear expansion, अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तुम्हारा बुक में इसको अल्फा एल भी लिखा जाता है, अल्फा एल और अल्फा, अल्फा एल और अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लेट्स सी दिस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज, coefficient of linear expansion is defined as, coefficient of linear expansion is defined as the change in length to the original length, original length means what, L0, coefficient of linear expansion is defined as the change in length to the original length per degree centigrade rise in temperature, per per degree centigrade rise in temperature, ये del T है नीचे इसलिए per degree centigrade rise in temperature। Coefficient of linear expansion is defined as
change in length to the original length per degree centigrade rise in temperature. Per degree centigrade rise in temperature. Clear? तो what is the unit of alpha? अरे यूनिट ऑफ अल्फा कितना आएगा? यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और कैल्विन इनवर्स. क्यों? अरे क्यों है? डेल एल एंड एल जीरो सेम यूनिट, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डेल टी बचेगा. तो डेल टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा, तो डेल डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और कैल्विन इनवर्स. नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा? डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या है बोलो? Definition: it is defined as the That P change in inverse. length to the original length. Alpha is defined as the change in length to the original length per degree centigrade rise in temperature. Change in length to the original length per degree centigrade rise in temperature. And what will get? Alpha dimension is k minus 1. बाकी सब जीरो है, k minus 1. इसमें एक नोट लिखेंगे, लिखो, इसमें एक नोट लिखेंगे. क्या नोट है? वी हैव टू राइट हियर डेल एल इज इक्वल एज डेल एल इज इक्वल अल्फा इंटू एल जीरो डेल टी. मेरा डेल एल क्या है? डेल एल इज एल टी माइनस एल जीरो इज इक्वल अल्फा एल जीरो डेल टी, और एल टी इज इक्वल L0 plus alpha L0 del T. Now L0 take it out, 1 plus alpha del T. This is what LT. So LT is equal L0 into 1 plus alpha del T. Very important expression. ये था linear expansion. Linear means what? Straight line. There is no breadth. Breadth must not be there. सिर्फ length, breadth is negligible. Only expansion in length, that is known as linear expansion. No breadth must be there. सिर्फ लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन, एक छोटा सा पतला सा वायर है, वो लीनियर एक्सपेंशन में जाएगा. हुआ? लिख दिया. सेकेंड एक्सपेंशन, राइट डाउन. डायमेंशन विल बी टी माइनस, नहीं यार, टी फॉर टाइम, टाइम है. टेम्परेचर कैल्विन है, कैल्विन माइनस 1, के माइनस 1 है. अरे समझ में आया मनसा? डायमेंशन विल बी के माइनस 1. मनसा हेलो? हाँ सर. के माइनस टी नहीं है, टी टाइम के लिए के माइनस 1. क्लियर? ओके. Sir, in the box, LT equals to L0 1 plus. 1 plus alpha del t. LT is equal L0 into 1 Yes, sir, plus alpha. Yes, alpha yes. del t. Alpha is the coefficient of linear expansion. Clear? Understand this? Next. Next is your second expansion is your area expansion or superficial expansion. Area expansion or superficial expansion. बहुत इंपॉर्टेंट है. सुपरफिशियल एक्सपांसन और सरफेस एक्सपांसन भी उसको बोला जाता है. सरफेस है इसलिए सुपरफिशियल हो गया. ये सरफेस है, सरफेस एक्सपांसन. और सुपरफिशियल मतलब लेंथ भी होगा, ब्रेड भी होगा, एक्सपांसन होगा. दैट मीन्स इफ आई विल टेक एन इरेगुलर बॉडी, सपोज एरिया हो रहा है तो एक इरेगुलर बॉडी होगा. एक इरेगुलर बॉडी अगर लूंगा तो इसको अगर हीट दूंगा, देयर इज एन एक्सपांसन इन द व्हाट? इरेगुलर बॉडी. पहले ओरिजिनल एरिया A0 था, अभी एरिया 80 हो गया, 80 हो गया. एरिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज ए, एरिया एट T डिग्री सेंटीग्रेड है. एरिया को फिजिक्स में A लिखा जाता है या फिर S लिखा जाता है, तुम्हारा मर्जी. अरे A भी लिख पाओगे, S भी लिख पाओगे. S इज द सरफेस एरिया, S भी इसको लिखते हैं. अंडरस्टैंड दिस? A और S. क्लियर? राइट डाउन. व्हेन एक्सपांशन टेक्स प्लेस एरिया वाइज, राइट डाउन, when expansion takes place area wise, then it is known as, when expansion takes place area wise, when expansion takes place area wise, then it is known as area expansion. When expansion takes place area wise, then it is known as area expansion. Area expansion. Expansion takes place area wise, then it is known as area expansion. Write down. Let A0 is the area at 0 degree centigrade. A0 is the area, write down, is the area of the material, area at 0 degree centigrade, and AT is the area at T degree centigrade, T degree centigrade. Then change in area, same. अरे ये रिक्शा पुलर what?
चैप्टर है, रिक्शा वाला पढ़ते थे पहले, उसके बाद हमने पढ़े, है कि नहीं? अरे एक बता दिया लीनियर मतलब दो और दो निकल जाएगा, कैसे देखो। देन व्हाट इज दैट? चेंज इन एरिया क्या होगा? देन चेंज इन एरिया, साई सात्विक बोलो। देन अरे चेंज इन एरिया क्या होगा? चेंज इन एरिया डेल्टा डेल ए इज इक्वल क्या है? 80 माइनस ए जीरो इज क्या होगा? बिट वन। चेंज इन एरिया इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर ओरिजिनल ए एरिया। जीरो ओरिजिनल एरिया, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, सर टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। सेम घिसा पिटा लिखा है। जहां पे कोफिशिएंट वर्ड देख रहे हो ना वैसे ही लिखोगे। जहां पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल, सुपरफिशियल, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब वैसे ही लिखोगे सब। सभी का स्टाइल एक ही है, समझ में है? सभी का स्टाइल एक ही लिखना है। एंड उसका सभी का भी डायमेंशन k-1 आएगा। देखो हो गया। नाउ देन आई कैन राइट हियर, therefore